Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss gender education and development. This is the fourth paper in M.Ed third semester, right? So, my lovely educators, we shall discuss all these topics that are there in the syllabus. It will be a long video, so I'll try to discuss the same in parts, right? Or you may also explore different chapters in the same video. It is easy for you in that way to follow different topics and save your time as well. So these are the different topics as you can see them on the screen. Demographic profile of women, इसमें क्या discuss करेंगे? Demographic profile में sex ratio क्या है country का? Especially we will discuss the same in Indian context, right? So उसमें इंडिया में सेक्स रेशो क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी ऑफ वुमेन क्या है, हायर एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्टेटस क्या है. तो इन these different contexts we'll talk about. Human development indicators कौन कौन से हैं, and then international policies for women's movement के लिए कौन कौन सी international policies बनाई गई हैं, constitution हमारे इंडियन constitution में कौन कौन सी provisions हैं, policies हैं, programs हैं for women in India. Women's education in India, present status and challenges ahead. पहले क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या है, और आने वाले समय में हमें भी लगता है कि और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. जेंडर इकोनॉमी वर्क पार्टिसिपेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू वुमेन एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम स्टडी करेंगे इन context with human development indicators, right? Participation in decision making through decentralization for women, evaluation of programs for girls education, कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल है, या उनमें और कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, नए प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, राइट? विल टॉक अबाउट दैट. Gender law and human rights, gender and disability, gender education in globalized economic order, gender budgeting, and methodologies for research on gender issues. These are the topics in the entire syllabus, and these are the questions that were asked in the previous syllabus. There are basically three sections in the paper. Section A and section B comprises of long answer type questions. You need to answer the questions. Actually, they carries 10 marks each, and there is a choice as well. Like from 1 to 4 you have to attempt 2 questions. Section B, again, you have to attempt 2 questions out of 4. So these were the questions that were asked in the previous year papers. Human development indicators, demographic profile of women, constitutional provisions for women empowerment in India, present status of women, education and challenges ahead, programs for girl education, gender-related laws and human rights, gender education in the globalized economic world, enumerate methodologies for research on gender issues. So these are the important topics. And in section C, you have to answer these questions. These are the short answer type questions, right? 3 marks each. Gender budgeting, gender disability. Actually, it's gender and disability. International policies on women, women education and economic development, women so work participation, decision making by women, gender insecurity in school education, news coverage of women development, significance of International Women's Day, and gender gap in India. So, my dear educators, let's know about some of the quotes on women empowerment. We should know about it because we need to highlight, we need to quote different proverbs, different quotations by renowned authors at different places, right? So, first quotation is by Malala. I raise my voice, not so I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot succeed when half of us are held back. Yes, when we are talking about gender equality, when we are talking about SDG 5, we talk about Planet 50/50, right? Half of us are held back. How can we imagine a successful world, right? So you can quote Malala. And next is the next quote here in front of you is by Plato. If women are expected to do the same work as men, right, we must teach them the same things. सेम चीजें पढ़ानी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए. A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men. Right? It's by Gloria. A feminist is anyone
who recognizes the equality and full humanity of women and men. उनकी इक्वालिटी को समझना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर एक केस में, राइट? नो डिस्क्रिमिनेशन. Freedom cannot be achieved unless women have been anticipated from all kinds of oppression. This is by Nelson Mandela. कितने सारे दबाव हैं, कितने सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब तक वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी women आगे कैसे बढ़ेंगी? So they should be free from all those kinds of restrictions. And a few more quotes in front of you. It's time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals. Gender is a spectrum. I mean, we talk about a society where gender term does not exist. We all should have been given equal opportunities to move forward. Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance. If we want to succeed in all the aspects, right, we need to go ahead with gender equality. It is explained by, said by Kofi Annan. And the first previous quotation was by Emma Watson. A gender equal society would be one where the word gender does not exist, where everyone can be themselves. Yes, we are human beings. We are human beings, right, Gloria? And here you go. If we talk about the architect of Indian Constitution, we also talk about, we say the father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Let's talk about some quotes by him. I measure the progress of a community by the degree of the progress which women have achieved. Ambedkar said this in 1927 in front of a crowd of more than 3,000 women. एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस कहाँ से पता चलती है कि वहां की जो वुमेन है उनको राइट्स कितने हैं, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है, वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं, राइट? एंड इन 1936 he urged women belonging to Joginis and Devdasis communities to fight against the regressive religious practices. कितनी सारी you know very well कि कैसी practices फॉलो करी जाती है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, राइट? तो उनमें से बाहर आने के लिए उन्होंने उनको मोटिवेट किया, राइट? एंड अ सन also would get a share as equal to the girl's share in the mother's property. Ambedkar has said once, I mean, property rights को भी reform किया गया by introducing new clauses that allowed women the personal choice to file for legal divorces. While arguing the maternity benefit legislation for women, he said, I believe that it is in the interest of the nation that the mother ought to get a certain amount of rest during prenatal period and also subsequently. हम बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स की, राइट? उसके बारे में भी बात किया गया. आई एम प्रिपेयर्ड टू एडमिट दैट दिस फैक्ट बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर इज प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट. कि हम सबकी डेवलपमेंट होगी, ओनली नेशन विल बी एबल टू सक्सीड, राइट? हाउ इज पॉसिबल? लाइक half of the people I'll talk about, half of the human being, half of the people, half of the population of the country, that is, if talk about, if the women, they are being ignored, they are not being given equal opportunity, how the country will be able to get success. Now, right, talking about the women run movements in the country, Baba Saheb said, I strongly believe in movements run by women. If they are truly taken into confidence, they may change the present picture of a society which is very miserable. In past, they have played a significant role in improving the conditions of weaker sections in the classes. You know, he talked about the weaker sections of the classes, so the upliftment of those classes. But now let's talk about the women as well, like upliftment of women. And on women education, he said, we shall see better days soon, and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education. Female, why they are not getting equal opportunities? घर में patriarchal society है, राइट? सो पैट्रियार्किकल सोसाइटी में क्या है? मेल इज द वन हु इज डिसाइडिंग. गर्ल्स को, बच्चियों को घर की जो है उन्होंने पढ़ने जाना है या नहीं पढ़ने जाना है, वो घर का काम करेंगी या क्या करेंगी. अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, दूर है, तो
गर्ल है तो पढ़ने नहीं जाएगी, बॉय है तो कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो उस चीज के लिए एजुकेशन मेल को भी दो, उनको भी समझाया जाए कि नो, लीव दिस ऑर्थोडॉक्स जो आपके थॉट्स हैं उनको आप छोड़ दो, एंड give equal opportunities to girls also, right? So these are a few quotations, you can quote them somewhere in your paper. See, education is a very important factor for the girl child, for the overall development of the country, of the nation, of the entire world. Education is an essential part of life for both the boy and the girl child. Whether it's a boy or a girl, education is important for all. Educating girls continues to be a problem in the most developing countries like India. Every girl needs education as an individual to make their life better, brighter, smarter. Girls' education is to stabilize their own life. Everyone has the right to develop their individuality. We have got our right. हम पढ़े, आगे बढ़े, सीखें, अपना करियर बनाएं. Everybody has got this opportunity. उसमें जेंडर का क्या रोल है कि गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बॉयज को मिलेगी? ये नहीं होना चाहिए. It should not be like that, right? And parents should be responsible for the development of the girls' education, right? But what they do, the wastage, their primary level schooling with the useless thoughts. And in India, the literacy rate was 64.8% in 2001 and 74.04% in 2011 census. But girls' education in India still requires a lot of improvement. आपको फिगर्स में ठीक है वेरिएशन नजर आ रहा है 64.8 से 74.04 और आगे ठीक है और बड़ा होगा, but the percentage is quite less as compared to the male counterparts, because there are a number of barriers in the girls' education. Especially they insist on their thoughts and dreams to be there in the future, and some parents, they are not aware. They don't want the girls to go to the schools and get education. हम metropolitan city में बैठे हैं, बात करेंगे कि हम सोच रहे हैं ठीक है सबको एक opportunities शायद मिल रही हैं, but if you talk about the rural India, सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती आगे बढ़ने की. Everybody is not been given equal opportunities. Girls are meant for only doing household chores, right? And where people really want to send their daughters to the school in the rural India, they think that education is not important for the girls at all. The family members are required to understand the major needs of the girl for the growth. So this is really very important. You can mention that. So look at the figures, my dear educators. ये यहाँ पर इस पिक्चर से अगर हम स्टार्ट होते हैं, पर्दा प्रथा से ठीक है निकल कर जब हम पहुंचे, बहुत सारी चेंजेस आई एंशियंट इंडिया की तरफ से मॉडर्न की तरफ ठीक है बढ़ रहे हैं. स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग for the right to education for girls. Look here, urban and rural population in India. Most of the population is there in rural India. And the girls are not being given opportunities to come forward, to study, to read, to be literate. Female literacy rate in India 2010 से 2021 91.95% बड़ा है. ठीक है, ये फिगर्स, ये आंकड़े हमारे सामने हैं, कह रहे हैं, बट हर तरफ से अलग अलग तरह के आंकड़े आते हैं. वी नो वेरी वेल इफ यू कंपेयर पेंडेमिक में और भी ज्यादा ये जो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा था, एंड देन और भी ज्यादा वो नीचे आ गया हमारा ग्राफ. इंडिया हैज सीन फिनोमिनल राइज इन लिटरेसी सिंस इंडिपेंडेंस. बड़ा है धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आई है, बट और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. ये नहीं कि खत्म हो गया बस स्टॉप, नहीं. पेंडेमिक में भी वो जो ग्राफ था वो थोड़ा और नीचे आ गया, और वो रूरल इंडिया में और ज्यादा हमें प्रमोट करने की जरूरत है, राइट? एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं that contribute to the low rate of girls' education? Some of the factors are there in front of you. So first of all, poverty, and alarming threat. Poverty hai. Look at the picture when the people, they have number of multiple kids, they have got many siblings, children, they have siblings, and certainly there is competition for everything, for food, for clothes, for each and everything, right? So they are not able to provide each and everything to their individuals, right? So that's why जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे सोचेंगे बच्चों को स्कूल में भेजें, राइट? और अगर पढ़ाई फ्री भी कर दी जाए तो उनके घर का ही काम रहता है, घर की ही उनकी नीड्स पूरी नहीं होती. दे हैव टू गो आउट, उनको अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है कुछ अर्न करने के लिए. सो पॉवर्टी इज द मेन कंसर्न, जिसकी वजह से गर्ल्स पढ़ नहीं पाती.
सेफ्टी फॉर गर्ल्स फार ऑफ स्कूल्स, स्कूल बहुत दूर होते हैं, गर्ल्स की सेफ्टी हमारे कंट्री में यू नो वेरी वेल, एवरी अदर डे न्यूज़पेपर खोलकर देख लो, सारी न्यूज उसी चीज के लिए भरी होती हैं, सेफ्टी नहीं है, गर्ल्स आर नॉट सेफ। तो दूर दूर पेरेंट उनको भेजने को तैयार नहीं होते, गर्ल्स आर रियली वेरी प्रेशियस, कैसे भेजते, वो ये प्रॉब्लम होती है। तो वी नीड टू लुक इनटू दैट आल्सो, दैट इज आल्सो अ कंसर्न, सेफ्टी ऑफ गर्ल्स, स्कूल्स आर वेरी फार ऑफ, अप्रोचेबल नहीं है, सेफ्टी का भी कंसर्न है, राइट। दे डोंट हैव एनी व्हीकल्स की कैसे भेजें बच्चों को, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पैसे दें, स्कूल्स काफी जगह पर दूर दूर है, right? And then gender inequality in India, the root cause of gender inequality in Indian society lies in the patriarchy system. Educating girl child is still seen as a bad investment because she is bound to get married and leave her paternal home one day. सोचा था एक दिन तो ये लड़की घर छोड़कर चली जाएगी, इसके ऊपर पढ़ाकर इन्वेस्ट करके क्या फायदा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिटरेसी आ जाएगी, प्राइमरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, फाइन, व्हाट अबाउट हायर एजुकेशन? सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ठीक है, हम पढ़ते हैं, बहुत बार न्यूज में आता है वो रिक्शा चला रहा था, उसकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, अच्छी चीज है, उन्होंने पेरेंट ने समझा कि मेरे बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, सबको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बस उतना लिटरेसी, बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, बस वहां तक सीमित रखा जाता है। तो दैट इज the issue, you can highlight the same factors contributing to the low rate of girls education. Let's talk about some more factors. Parents attitude, negative parental attitude towards educating daughters is one of the important challenges to promote like girls education in India. गर्ल्स एजुकेशन को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे, चैलेंज है, क्यों? पेरेंट्स का एटीट्यूड ऐसा है रूरल इंडिया में बहुत जगह पर, राइट। मैं ठीक है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ भेज रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, राइट, वी गेट टू नो कि वो लॉयर बन गई, वो ये हो गया, वो जज बन गई, उन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल की, वो जो हाईलाइट होती है, बट सबको मौका नहीं मिलता है, राइट। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफरेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की हैं, पेरेंट्स जब लिटरेट नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, राइट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कीम्स की हमारे अगर गर्ल चाइल्ड है हमारे पास तो उसके लिए कौन कौन सी स्कीम है, हम उसके बारे में भी अपकमिंग स्लाइड्स में बात करेंगे कि कितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं टू प्रमोट करने के लिए, राइट। वो उसकी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स लिटरेट नहीं है, ये भी एक जो है वो बैरियर है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अर्ली मैरिज, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज बंद हो गई है, बट व्हाट अबाउट स्टिल बहुत जगह पर क्या होता है, गर्ल्स की मैरिज बहुत जल्दी कर दी जाती है, गर्ल्स आर फोर्स्ड टू मैरी यंग, राइट। 18 साल की शादी करनी है, बहुत जगह पर अभी भी पहले हो जाती है, तो वैसे उसको घर बिठा के रख लेते हैं कि अब घर का काम सीखना है, ये करिए वो करो, अब कुछ साल ऐसे स्पेंड करो, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, घर का काम करने के लिए आप सीख लो, और आप पढ़ने के लिए नहीं उनको भेजा जाता आगे। तो दैट इज another problem, early marriage, right? Education is key for girls to gain the life skills and they need to escape the cycle of poverty. And now other factors और कौन कौन से हैं? देखिए, अगर हम पुराने समय के से बात करते चले आ रहे हैं, थोड़ा आप रेफरेंस दे सकते हैं, 1200 BCE जब कास्ट सिस्टम था, राइट, बेशक वो इट वाज आउटलॉड इन 1955, बट इट्स इन्फ्लुएंस थ्राइव्स इन द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज वेल। सबको मौका नहीं मिलता था पढ़ने का, राइट। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, चार वर्ण में जैसे डिवाइड था, एंड देयर वाज अनटचेबल्स आल्सो, उनको मौका नहीं मिलता था आगे पढ़ने का, ठीक है। धीरे धीरे वो सारा सिस्टम हटता गया, पहले ड्रॉप आउट होने शुरू हो गए बिकॉज दे वर नॉट बीइंग गिवन इक्वल फैसिलिटीज इन द स्कूल, और बहुत सारी चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आई, वो सारी चीजों से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें ठीक होना शुरू होगी। बट व्हाट अबाउट द गर्ल्स, वो तो हर एक उसमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, जो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है उनको भी तो अवेयर कराना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर रीजन की गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, दैट इज वन ऑफ द बैरियर्स ऑल्सो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्केल मेल वर्सेस फीमेल, राइट, अब देखिए ये डेटा कलेक्ट किया गया है, व्हेन जॉब्स आर स्कार्स men should have more right to a job than a women, yes or no? Look at the graph, everybody says yes. I mean, why not competency, why not caliber, why not talent, why not education, why not expertise? उसके बेसिस पर जॉब नहीं, अगर जॉब्स कम है तो प्रेफरेंस किसको दो? मेल को, बिकॉज मेल इज
considered as the main earning member of the family. Why like that? तो ये नहीं होना चाहिए. So that is also one of the reasons. Right to Education 2009 Act आया हमारे पास, an act to provide free and compulsory education for all the children between ages 6 to 14. Right? इनको free education देंगे. Free education देंगे. However, retaining girls and ensuring that they complete their school continues to remain a challenge. क्यों? एजुकेशन फ्री मिल रही है, फीस नहीं देनी है जाकर स्कूल में, बट घर का काम कौन करेगा? घर के लिए पैसे कौन अर्न करेगा? बच्चों को उसमें लगाया दिया जाता है. हमारी इनकम कम है या कुछ है, हमारी बेटी या कुछ भी या कहीं और काम करके कोई और हाउस होल्ड चोर्स, छोटे मोटे जॉब स्किल्स जो भी उसको आते हैं उसको करके शी विल अर्न मनी. पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता. राइट, दैट इज अगेन अ चैलेंज. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लो रेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन को धीरे धीरे जैसे इंप्रूव करने की कोशिश की गई, उसके कुछ स्टेप्स की हम बात करेंगे. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय. देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये इशू था कि सैनिटेशन का. गर्ल्स को इसलिए भी स्कूल में नहीं भेजा जाता था क्योंकि सैनिटेशन की प्रॉब्लम है. टॉयलेट सेपरेट नहीं थी बॉयज एंड गर्ल्स की, जिसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम होता है. कहीं जगह पर तो वॉशरूम्स है ही नहीं है, रेस्ट रूम्स दे आर नॉट देयर, स्पेशली फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स. लाइक इट वाज अ कंस्ट्रेंट एंड देन अ प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय. तो साइड बाय साइड हम स्टेप्स की भी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. राइट. और एक आपके सामने ये बिहार में एक स्कीम लॉन्च करी गई, बालिका बालक साइकिल योजना, कि उनको साइकिल्स प्रोवाइड किए गए ताकि गर्ल्स जो हैं फार ऑफ स्कूल्स में पहुंच सकें, जो दूर हैं, पैदल नहीं अगर जा सकते, अप्रोचेबल नहीं है, तो दे विल बी एबल टू रीच एंड कंटिन्यू देयर एजुकेशन. राइट. गर्ल पॉपुलेशन ऑफ 6 years एंड अबव, whoever attended the school in India and Bihar, figures they are there in front of you, बहुत कम थी. That's why उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम, बिहार बाइसिकल स्कीम, ये स्टार्ट की गई. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई. आप उसमें भी लिख सकते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एंड देन balika cycle scheme also in Bihar. And see, now let's talk about computer based functional literacy. ये भी start किया गया कि प्रोग्राम, दिस इज एक्चुअली फॉर एडल्ट एजुकेशन, कि 10 to 12 वीक्स में आपको, जिसको जो लिटरेट नहीं है उनको रीडिंग आ जाएगी. दैट वाज फॉर वुमेन बेसिकली. राइट. जो घर में रहती हैं, घर में रहकर भी दे कैन गो हैड विद दिस लिटरेसी प्रोग्राम. यू कैन गो. दिस इज आल्सो एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द रेट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. राइट. तो एक हमारे पास ये आता है, एजुकेटिंग गर्ल्स इज स्मार्ट फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होता है. ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. राइट. Now you can go ahead with that. When a girl receives an education, she has a real opportunity to break the cycle of poverty in just one generation. Right. So out of the world's 130 million out of school youth, 70% are girls. When a girl goes to a school, she will reinvest 90% of her income into her family as compared to 30 to 40% of a man. And when 10% more of its girls goes to school, a country's GDP increases an average of $3. So, my dear educators, if we go ahead with that, I mean, educating girls is smart for all of us. Economic development में कैसे help होता है, आप इसके बारे में भी पूरा analysis करके, explain करके, you can talk about that also, कि these are the benefits. Now, there is a gap that we know very well where India stands. If you look at the figures, there is gender gap index, right? Gender gap, gender pay gap also is there. That is there in front of you. इसके लिए जरूरत थी equal pay scheme, right? Equal work, equal play. And India aims to grow from a medium developed country to one of the higher rank. Considering its recent strides in education, it's possible for India to attain this goal. However, this can only be done by realizing there is still more work to be done in closing the gap between boys and girls, as these top 10 facts about girls' education in India. सीखिए, ये कितना आपके सामने है. डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमने जो अभी डिस्कस भी किया है, इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट गर्ल्स का जो है वो लो है, एंड डिफरेंट स्टेप्स उठाने की जरूरत है. 1 or 2 steps we have discussed this right now, and in the upcoming videos we shall discuss about
various schemes, international, national, and other projects launched by different governments, also different state and central government too. We'll talk about that also, because the video will be long, so I'll be sharing the same in parts. So please make sure you stay tuned and watch another part as well. Thank you.